मेरे पिताजी एक चीज़ बोलते थे व्हेन आई वाज यंग आल्सो, एंड आई थैंक माय पेरेंट्स फॉर वन मोर थिंग, दैट्स एक्सपोजर। दैट्स द सेकंड थिंग माय डैड टोल्ड मी। ही सेड कि वो इंडिया के सबसे बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और वन ऑफ द बिगेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर। मुझे याद है जब मैंने कंपनी बेची थी तो वन थिंग आई वांटेड टू डू इज आई थॉट अबाउट के मैं सब छोड़ के एक्चुअली अभी फंडिंग में बहुत ग्लैमर है। मुझे फंडिंग रेज करना है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में क्या इशू होता है, जो प्रोडक्ट्स आप इन्वेस्ट करते हो उसमें आप यूज करते हो, योर पेरेंट्स यूज इट, दादी भी यूज करते हैं, नानी भी यूज करते हैं, सब कजन्स भी यूज करते हैं, मेरे बेबी भी यूज करती है। रेट फ्रॉम 1 to 10 द हैंड यू आर डेल्ट मीनिंग जो सर्कमस्टांसेस में आप रहते हो, द सर्कमस्टांसेस यू आर बोर्न इन। हाय एवरीवन, वी हैव अ वेरी न्यू गेस्ट और इनकी कहानी तो आप सबने सुनी है, बहुत इंस्पायरिंग है, बट आज हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। हम इनके बारे में जानेंगे एंड आई विल मेक श्योर दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी वर्थ इट फॉर ऑल ऑफ यू, for all the viewers and all the listeners of our podcast. Hi Arjun bhai. Ayush, what's up? Finally we are excited to do this. Yeah. Long awaited conversation, तो मजा आएगा, काफी मजा आएगा। मेरा पहला सवाल है and I want you to feel a bit nostalgic about it because it is like that. तो while you were growing up, जब आपके पेरेंट्स आपको बड़ा कर रहे थे, पढ़ा रहे थे सारी चीजें, now when you are here sitting here right now right away, आप किस चीज को लेके सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलते हो कि उनकी पेरेंटिंग जर्नी में वो कौन सी चीज थी जिसको आप सबसे ज्यादा मतलब ग्रेटफुल हो, जिस चीज को लेके? मेरे पिताजी एक चीज बोलते थे व्हेन आई वाज यंग आल्सो। ही सेड माय जॉब इज टू गिव यू टू थिंग्स, एजुकेशन एंड एक्सपोजर। उसके आगे व्हाटएवर आई गिव यू इज अ बोनस। मटेरियल पोजेशंस, आई गिव यू गुड लाइफ, I give you all of that. That's not my goal and my objective. My goal is that I have to give you the best education. The best education means the best school education, the best after school education, जो best classes है, जो best sports coaching है। अभी मैं I love sports, but मैंने कोई high level पे खेला नहीं है, but equipment मुझे highest level का मिला है, coaches मुझे highest level के मिले, and went to a great school. फिर जब मैं 18 साल का था, I went to US to do my undergrad. 4 साल वहाँ US में बिताया। My parents spent about 2 crore rupees for my education there. And then I came back to India. And जो वो 4 साल थे US में, that made me the person I am. Right? So I thank my parents for the best quality education. And I thank my parents for one more thing. That's exposure. That's the second thing my dad told me. He said कि जब वो बच्चे थे, जब वो young थे, तो मेरे दादाजी, my dada didn't have that much money at that time or that many resources, और वो समय फॉरेन जाना बहुत बड़ी चीज थी। बट यू शुड टेक माय डैड ऑलमोस्ट एवरी ईयर आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड से वो ट्रिप में डैड को ही वाज अलाउड टू बाय ओनली वन थिंग इन द होल ट्रिप। एज अ किड who's 10 years old, 12 years old, he could take home only one thing. But my dada said, the trip I'm giving you, the exposure, that's more important than the gift you take home. And so I have traveled more than 40 countries growing up. I've traveled the world with my parents. And that exposure to see the world, to see different things, to have those conversations, to see things outside of जो हमारे इंडिया में है, जो हमारे बॉम्बे में है, जो हमारे घर के पास है, that exposure allowed me also to become a person who is very open to being in new situations, to meeting new people. So I think if I'm to go back, education and exposure from both my parents and from my grandfather एक चीज थी, and that is value for money. It's like वो इंडिया के सबसे बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और वन ऑफ द बिगेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, बट उनका लाइफ बहुत सिंपल था। वो इंडिका में जाते थे ऑफिस, क्लिनिक। जब टाटा नैनो लॉन्च हुआ था, ही लाइक वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट हिज कनेक्ट इन टाटा मोटर्स एंड बुक 2 टाटा नैनोस। हर दिन वो लाइक आई रिमेंबर जब मैं 5वीं कक्षा में था तो वी मूव फ्रॉम पेंसिल टू पेन। मेरे दादाजी मुझे एक शेफर का पेन गिफ्ट किया था। आई थिंक वो समय में 2500 रुपीज, 3000 रुपये का पेन था। पर हर दिन दादा 5 रुपए के रेड पेन उनके पॉकेट में डाल के काम पे जाते थे। एंड आई सेड, यू आर गिविंग मी दिस 3000 रुपी पेन एज माई फर्स्ट पेन, और आप 5 रुपए के पेन लेते हो। एंड ही सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई रिमेंबर वेयर आई केम फ्रॉम। अभी पैसा है, अभी मैं लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, बट आई हैव टू रिमेंबर द जर्नी एंड वेयर आई केम फ्रॉम।
And I remember my dada at 60, 65 going to London, traveling economy. Why should I spend extra? Business class का खर्चा नहीं करना है, interest नहीं है. My dada would live outside the city. I remember him living in Reading when he had work in London, just because save करना है. And that frugality or that mindset मैं अब तक रखता हूँ. कंपनी बनाई है, कंपनी बेची है, पैसा बना है. I still fly economy class. I think you've beautifully explained and expressed here. और मुझे लगता है इंडिया में आज भी ये जो पूरा कल्चर है of exposure was the word, right? The keyword that you mentioned. I highly believe in that. मैं हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं नए नए शहर नए नए जगह जाता हूँ जस्ट टू गेट दैट एक्सपोजर. और इस कल्चर को मैं चाहता हूँ कि इंडियन पेरेंटिंग का एक पार्ट बन जाए जो शायद फॉरेन नहीं अफोर्ड कर सकते. इंडिया में ही नए नए शहरों में ज़रूर घुमाना चाहिए अपने बच्चों को और ट्रैवल करवाना चाहिए फॉर श्योर. आई हाईली अग्री विद दैट. आई थिंक वो एक हमारी गलती है लाइफ में कि मैंने आई बीन टू मोर प्लेसेस आउटसाइड ऑफ इंडिया दैन इंडिया. एंड वो गलती है हमारी बिकॉज राइट हमारे देश में इतने अच्छे जगह है. एंड कोविड एक्चुअली ब्रॉट मी बैक टू टूरिज्म इन इंडिया. तो जब कोविड का समय आया था वो 2021 में हमने कंपनी बेची थी, बहुत टाइम था. आई सॉ मोर ऑफ इंडिया देन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. एंड आई थिंक अभी एज अ नेशन we need to do more for our tourism. One thing I saw was कि यार Bangkok gets more tourists than the whole country of India. So yes, one is we need to improve the experience for tourists in our country to get more foreign tourists to come because history है, legacy है, अलग अलग जगह है. Which country can you go skiing at the same time as you can be on a beach? Which country can you go into the mountains and can you go and see a desert temple or a desert or a palace or a fort which is 1,000 years old? That's what we have, right? We need to do a better job of marketing. मुझे याद है जब मैंने कंपनी बेची थी तो one thing I wanted to do is I thought about कि मैं सब छोड़ के इंडियन टूरिज्म मिनिस्ट्री में काम करूं. wow. But I think the other thing is that other than इंडियन टूरिस्ट को पुश करना फॉरेन टूरिस्ट को पुश करना, इंडिया आना, हमारे whenever we have a break we should spend time seeing India. So correct. I noticed something when I went for my travels to the northeast. तो नॉर्थ ईस्ट से हमारे 11% ऑर्डर्स आते थे डॉक्टर वैद्यास में. एंड लॉजिस्टिक्स का बहुत इशू था वहाँ. राइट तो आई यूज्ड टू ट्रैवल देयर टू गुवाहाटी टू शिलोंग टू सी इम्प्रूवमेंट. एंड एट सम पॉइंट व्हेन आई वेंट टू शिलोंग आई मेट द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ मेघालय एट दैट टाइम. राइट एंड ही सेड क्या आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर में शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है? सर मुझे पता नहीं है. सर आप सब बॉम्बे के लोग जापान जाते चेरी ब्लॉसम देखने, सही बात. आप यहाँ क्यों नहीं आते हो? ये आपका देश है, आप वहाँ क्यों जा रहे हो? ये पॉपुलराइज करो. हमें पता भी नहीं है हमारे देश में क्या क्या है. सो एज अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल हु हैव डिस्पोजेबल इनकम, जिनके पास पैसा है, जो हॉलिडेज पे जाते हैं, we need to do more to fuel the tourism industry and the tourism opportunity in our country. And if we don't go, why will foreigners come? सही बात है, बिल्कुल सही बात है. You mentioned legacy in between. I have a very interesting question. Again, I am taking you back in your teenage, something like that. So you knew that your grandfather had created a huge name and reputation and responsibility, accountability in the entire nation, right? While growing up, what kind of responsibility you used to टेक योर ओन बाय योर सेल्फ कि यार मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज की डेट में जो मुझे फ्यूचर में इसको बड़ा बनाना है. आज तो ऑफकोर्स यू हैव टेकन द एग्जिट एंड एवरीथिंग, बट बैक देन व्हेन यू वर 16 17 आप देखते थे क्लिनिक पे जाते थे दादाजी को नैनो में, क्या सोचते थे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टाइम पे आपके मन में? तो आई थिंक पहले तो मैं बहुत इंस्पायर्ड था मेरे दादाजी से बिकॉज हर दिन 5 बजे सुबह उठ जाते थे, फिर वो 1 घंटे के लिए बुक्स पढ़ते थे, मेडिकल बुक्स. फिर 6:30 बजे वो गोल्फ के लिए निकलते थे, 8 बजे तक वापस घर आते थे और फिर सेम ब्रेकफास्ट, सेम क्लोथ, सेम रूटीन, सेम कार, सेम टाइम रीचिंग द क्लिनिक. एंड आई रिमेंबर एवरी सेकेंड सैटरडे वो ट्रेन से सिलवासा जाते थे टू हिज फैक्ट्री. एंड ही यूज्ड टू कीप टेलिंग मी, बेटा आजा हमारे साथ, देखो क्या बन रहा है वहाँ. एंड इट वुड बी सैटरडे के 6 बजे 7 बजे सुबह दादाजी जाते थे. And so many times he invited me to go and I said, हाँ मैं आ जाता हूँ. And I never turned up only to go to the factory.
But I think as I grew older and older, I understood the importance of Ayurveda because my dada cured me of asthma. I suffer from juvenile bronchitis, मैं pumps, nebulizers, inhaler, steroids, सब चालू में लेता था and दादाजी cured me of asthma. आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के साथ. करेक्ट. तो मुझे फिर ये फीलिंग आने लगी कि ये फैमिली लेगेसी तो है, बट फैमिली लेगेसी के आगे आयुर्वेदा हैज हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ. मेरी जिंदगी चेंज हुई है बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा, राइट? आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन रन, आई कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो एस्थमा की वजह से चाइल्डहुड में मैं नहीं कर पाता, जो सब दूसरे बच्चे जो मेरे दोस्त कर पाते थे. तो वो समय में स्टार्टेड फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टेड विद जो हमारे फैमिली के फॉर्मुलेशन थे, जो स्क्रिप्चर्स में थे, जो संस्कृत गुजराती में थे, ट्रांसक्राइबिंग दैट ऑन अ कंप्यूटर. मेरे दादाजी अभी थिंक अबाउट 2005, 6, 7 computers had just come, laptops had just come. I remember my dada had this Sony Vaio laptop. Yeah. उनको एक्सेल चलाना इतना आता नहीं था, तो he would read out the formulation to me. और मैं एक्सेल शीट में लिख लेता था क्या है. And eventually those are the same formulation that I used when I started the company, etc. all of that. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी मुझे. फिर मैं यूएस जब गया तो आई सॉ योगा बीइंग रीपैकेज, योगा मैट्स, योगा जिम, योगा अपैरल, लुलुलेमन. इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी थी यूएस में, मल्टी बिलियन डॉलर, 8, 10, 15 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, एंड इंडियन कंपनीज का शेयर इसमें कुछ नहीं था. करेक्ट. एंड आई एम वेरी पेट्रियोटिक. आई वेयर दिस बैंड विद द इंडियन फ्लैग ऑन माय हैंड. तो आई सेड ये तो गलत है, वी हैव टू ओन दिस अपॉर्चुनिटी. एंड सो आई कॉल्ड माय दादा फ्रॉम कैंपस एंड आई सेड मतलब बहुत अच्छा है कि योगा ग्लोबल बन गया है, बट वी कांट लेट द सेम हैपन विद आयुर्वेदा कि इंडियन कंपनीज डोंट गेट एनी शेयर ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ ऑफ आयुर्वेदा, राइट? सो आई थिंक दैट वाज द सेकंड थिंग. एंड द थर्ड थिंग इज कि ये सब फिर मैं इंडिया आ गया वापस 2013 में. आई डिड अ जॉब फॉर 3 years इन अ प्राइवेट इक्विटी फंड. एंड हमेशा फाउंडर की लाइफ में ना ये एक मोमेंट आता है, योर आइडिया, योर थॉट, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको करना है, वो बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहता है कि इसके साथ कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ सोचते हैं. बट 2016 में माय दादा पास्ट, एंड when he passed he left behind this formulation, this legacy. और मेरी मन में ये सोच थी कि इसके साथ कुछ करना है, कुछ करना है. But I was 24, right. 25 years old. वो समय मेरा जॉब बहुत अच्छा था. मैं फाइनेंस में काम कर रहा था, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग में, वेरी प्रेस्टिजियस जॉब. नॉट मेनी पीपल ऑफ माई एज हैड दैट काइंड ऑफ जॉब. एंड मेरी सैलरी वो समय पे 30 लाख पर ईयर थी. भाई आप सोचो 2016 में 30 लाख पर लाइक 75 lakhs टुडे, राइट? नॉट बैड. दैट्स वेरी गुड फॉर समवन एट दैट एज. एंड मैं घर पे रहता था पेरेंट्स के साथ, तो लाइक कोई एक्सपेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ था ही नहीं, राइट? सो देन आई वाज थिंकिंग कि जॉब छोड़ू नहीं छोड़ू, जॉब छोड़ू कि नहीं छोड़ू. एंड देन वन मोमेंट, पिवटल मोमेंट चेंज्ड माय लाइफ. माय दादा एंड दादी यूज्ड टू लिव इन अ हाउस इन नेपन्सी रोड एंड इन मुंबई. एंड दादा के लास्ट 1 साल में लाइक ही वाज नॉट कीपिंग सो वेल, सो माय डैड moved him to our house. In our building we had an extra flat few floors below, so he was staying with us. और वो घर खाली रहता था. And after my dada passed, my dadi was living with us only then, because she would be alone, of course. So वो घर खाली पड़ता था. There was one caretaker there. And my dada had passed, mood in the family was down. My parents had gone to Goa for a friend's party or anniversary party or wedding party or something like that. And 3 बजे सुबह कॉल आया, please come urgently, there is a problem in the house, in that house. And I didn't know what was happening, so I just got into my car, drove my car and got there. The house had burned down completely. The AC had short circuit and the house had burned down completely. And I've grown up in that house. आपको ऐसा लगता है ना कि जो आपकी बचपन की घर है, जहाँ आप 3, 4, 5 साल थे और वो आप जाते थे दादा दादी के घर, you see that house completely black. It's absolutely black, right? Can't see anything. I was shocked. I couldn't go in the house only. I came out, I spoke to the police, gave my statement and I left. 2 things came out of that house which were not damaged. Just 2 things. And because ये AC का फायर मेरे दादाजी के रूम में हुआ था, उनके रूम में कुछ 400 books थे. The moment the fire started, all the books burnt, right? And the books burned, rest of the house burned. 2 things remained. One was my great grand Nana's writings on Jainism in a plastic bag, and there was a plastic bag with all these formulations of Ayurveda. तो वो जब मैंने देखा तो मेरे डैड ने मुझे बोला
It's God's way of telling you that these formulations have survived and He wants it to survive. Do something with it. And that's when I said, this is the turning point for me. I have to do it. Quit my job, and that's the story. Of course, everyone knows what happened next. Coming to current life, you now, I don't know the number, but you mentor a lot of hundreds of founders in D2C and quick commerce and e-commerce space, right? One thing I want you to share very honestly, what do you think these D2C founders, be it with experience, be it new founders, lack the most, and they come to you and you fix that very first thing in the first place ki, acha, this is that one thing that you've been noticing founders are not trying to make it work. You know, actually अभी funding में बहुत glamour है. Okay. मुझे funding raise करना है. तो all the conversations are about मुझे पैसा चाहिए, मुझे funding चाहिए, मुझे पैसा चाहिए. Sometimes you're not trying to solve the main issues in your business, which are revenue बढ़ाना है, sales बढ़ाना है, repeat लाना है, customer को delight करना है, अच्छा product बनाना है, supply chain करना है. तो I think that in this environment where funding is... Your daughter is here. She... आजा. Come here. Come. Okay, we have a new guest on the podcast. सबको fund उठाना है. Maybe because it's glamorous, maybe because newspapers में articles आते हैं, maybe because Shark Tank आया है, Shark Tank पे सबको जाना है. But actually all businesses don't need funding. And before you get funding, or before you are liable or you are able to receive the funding, you have to do something with the business. To get traction, get customers, delight the customers, make them happy. I think that part founders are missing because सबको funding चाहिए. So first conversation, sir, I need your mentorship and funding. Sir, I want you to help me raise money. But there are massive businesses like Snitch. Yeah. It got to 100 crore without raising any money. Correct. Focused on the basics. So there is so much you can do other than just raise money that you need to focus on your business as well. I think that's one thing that off late D2C founders are focusing on, which I'm not saying you should not focus on it, but इसके पहले और बहुत चीज करनी होगी. And funding is not the be all and end all of any business. I feel like what you're trying to say here is कि वो जो first few years होते हैं business के, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा hustle करना होता है, सबसे ज़्यादा core experience gain करना होता है. And funding may be important. Funding may be important. Escape नहीं बोल रहा हूँ मैं. नहीं. But with that mindset, it feels like that, you know. मैं ये बोल रहा हूँ कि एक वन ट्रैक फोकस है सबका कि मुझे फंडिंग चाहिए. फंडिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है. That is wrong. What's your message? My message is that yes, funding is important. Yeah. But it's not required for every business. One. Two, फंडिंग के अलावा बिजनेस में और बहुत चीजें हैं. और VC फंडिंग इज सम 15-year-old इन इंडिया. उसके पहले इतने बड़े लिस्टेड कंपनीज हैं हमारे जो VC फंडिंग के बिना बन गए. उनका क्या? So yes, I am a VC. Yes, I do give startups capital. I do give startups funding. But there is also a lot more than this that startups can use and do. Makes sense. I mean, I like the fact that you're being honest all the time. What's your criteria when you genuinely fund a startup or an idea? Let's just say that. I think the first and most important thing is, who is that person? Why do they have a right to win? Why will they fight through tough times? What will they do to make this idea win? Right? That's crucial. So who is the founder? And 50% of the decision on that. 20% of the decision is, how big is the market? Like, is there a big enough market? Consumer products में क्या issue होता है? जो products आप invest करते हो उसमें आप use करते हो, your parents use it, दादी भी use करते हैं, नानी भी use करते हैं, सब cousins भी use करते हैं, मेरे baby भी use करती है. तो in that circumstance you get a lot of bias and that personal bias of what's around you. And so you have to remove that personal bias by assessing a product dispassionately. Remove that bias कि my mom uses it, so it's a good product. So is the market big enough that I can make a 5x, 10x business? And then the third thing is जो economics, revenue, scale, gross margin, EBITDA, repeat rate, etc. All of that. So that is all there. 50% founder, 20% market, is it big enough? And 30% फिर जो standard economics and team के बारे में होता है. I somewhere read कि when you were running Dr. Vaidya's, आपको बहुत lakhs के order आते थे, lakhs and lakhs of order you used to get, right? और वही सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ा एक टारगेट होता है आज भी D2C का. And I still feel like only a few 0.1% are able to achieve that. उस टाइम पे, आज से 5 साल 7 साल पहले, when you've hit that goal, how do you used to look at that data? How do you used to have that perspective? These are all humans
consuming my product and मेरे को इस पे क्या repeat चाहिए, जो भी चाहिए. What was your perspective? You know, I heard a founder once say कि e-commerce में इतने orders आ जाते हैं कि you lose track and people buying your product become names, phone numbers and email addresses and you forget they are humans. So I think the most important thing for me as a founder was get on calls with your customers. They are humans and you need to feel like they are humans and you need to feel the emotion and the feeling and the reason they are consuming a product. So पहले साल में तो मैंने 1000 customer care call अपने आप किए थे to understand who is my customer. Actually customer 82% outside of top 10 cities है, 70% of my customers don't speak English, तो मैं इंग्लिश में ऐड करने की कोई फायदा ही नहीं आती. सही बात, right? सही बात. And then after that, even when I was getting 5,000 orders a day, at least दिन के 5 customers, 10 customers के साथ मैं हमेशा बात करता ताकि you don't lose track that you are dealing with humans, they are your customers, they love your product. So even the biggest founders, I spoke to a unicorn founder who runs a marketplace. He said, अब तक मैं महीने के 150 customers के साथ अपने आप बात करता हूँ every month. It's taking out 2 hours, 3 hours of your time. You have to do it. Because your business is nothing without your customers, right? Right. You mentioned marketplace. I've been observing about this new area. I mean, अभी 6 साल 7 साल पहले उतना 10 साल पहले नहीं था. Of course, not talking about the bigger ones. Only small, very specific marketplace that sells very specific products, right? What are your thoughts about this marketplace business? Are they profitable? Are they going to work in India? नहीं देखो, I think marketplace तो चलने वाला है. But marketplace में और D2C brand में बहुत फर्क है because marketplaces में think about fashion. Right. Where do you buy fashion? You buy fashion on Myntra. अभी Flipkart, Amazon fashion से लेते हो. Tata Click है, Jio है. Maybe that's about it, right? Yeah. If you think about personal care, Nykaa Purple and that's about it, right? If you think about electronics, the first name that comes to your mind is Flipkart. उसके बाद पहले तो लोग Snapdeal से लेते थे, अभी थोड़ा बहुत लेते हैं. तो in marketplace, there are 1, 2, 3 players who make it really big and the rest all die. So हम जो बोलते हैं ना mortality rate, chance of survival, lowest है. अगर आप जीत जाते हो तो आप सबसे बड़ा बिजनेस बन सकते हो. आप यूनिकॉर्न बनेंगे, हजारों करोड़ का वैल्यू क्रिएट करेंगे, बट वेरी फ्यू पीपल विल क्रिएट दैट वैल्यू. ओके, आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन. आई मीन, मुझे लगता है दिस इज हाउ, ऑफ कोर्स ये तो अब कुछ पिछले सालों से हो रहा है कि ऐसा ही किया जाता है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब इंडिया में हम बात कर रहे हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते तो हम बोलते कि हमने यहाँ से MBA किया, यहाँ से ग्रेजुएशन किया और ऐसा ऐसा रहा हमारा करियर. बट आई फील लाइक इसको रिप्लेस करने की जगह हमें ऐसा बोलना चाहिए, दीज आर द स्किल सेट्स आई हैव गॉट, कि मेरी एक कोर टॉप 5 टॉप 10 स्किल सेट्स है. नाउ आई वांट टू नो at this point, today we are speaking, आपकी if you were to mention top 10 or 5 irrespective of the numbers, आपकी top skill sets कौन सी है आज की डेट में? So I'll talk about first areas of expertise. हाँ जी. I think if I am to put on my CV or create my CV and talk about my skills, technical expertise would be D2C, consumer brands, e-commerce, startup investing and early stage valuations. These are the technical skill sets of mine. Right. Outside of this, Ayurveda, because that is a place I built my business and I have family legacy. So healthcare, health supplements, correct, vitamins, mineral supplements, etc. Right. So that's a skill set. I think in VC, I have another skill set or another mode जो most VC लोग, investing लोग के पास नहीं है, and that is distribution. I'm one of the few people who has a personal distribution outside of my fund or outside of my business, and that's something I built over the last 2-3 years as well. Now I'll talk about personality skill sets. हाँ जी. मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है. स्पोर्ट्स में देखो, वर्क में देखो, टैलेंट इतना नहीं है, बट हार्ड वर्क है. आई एम वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्कर्स इन द रूम एंड मोस्ट कंसिस्टेंट. अगर आप बोलो हर दिन प्रैक्टिस के लिए आ जाओ स्पोर्ट्स में, अगर आप बोलो कि हर दिन काम करो, हर दिन शो अप करो, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा तो आप शो अप करते रहेंगे, तो आंसर इज यस, आई विल कीप शोइंग अप. सो हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी. आई एम एबल टू meet new people and strike a vibe. I like people. Right. I enjoy people. I enjoy engaging with people. I enjoy meeting new people. So I'm very sociable and I like to be easygoing. Right. And the last thing I would say is I don't drink tea or coffee, but I have high energy. My levels of energy are
more than most people. That allows me to be on a flight 3 times a week and still be able to function, etc. All of that. So I think these are my personality skill sets. The last one is more of a superpower, not a skill set. But I'm lucky. For sure, man. For sure. Okay. Next question. Yet interesting. The thing is, we all understand there is this fact that leverage exists in our life, in all of our lives, but not everyone is able to leverage in life. Do you agree with that? Like a lot of people. I think everyone is able to leverage, but the extent you leverage. Right. जितना आप leverage कर सकते हो वो अलग-अलग है लोगों What's your way of thinking at leverage? Leverage of network of other people in life in general, with your let's say in your success, ठीक है, इस perspective से देखते हैं कि leverage आपने कैसा किया है जो बाकी लोग शायद नहीं कर पाए within the same network they had and everything they had आपके पास भी था, but you did something different. And हाँ, look, I think I got asked an interesting question, and this is a great way to think about it, and maybe an exercise जो भी लोग देख रहे हैं as well to think about. The first question was, rate from 1 to 10 the hand you were dealt. Hand you were dealt meaning जो circumstances में आप रहते हो, the circumstances you were born in, what God gave you, that you can't change. Correct. Right? And I gave myself, let's say, 7 on 10. I was dealt a reasonably good hand, right? And I'm very happy with what I got. I had a comfortable life. I got a great, what I talked about, what my parents gave me, etc. All that. The second question is leverage, which is आपको जो hand मिला है, जो cards हाथ में मिले हैं, आपके पास भी लोग हैं जो game खेल रहे हैं. Compared to the cards you were dealt, rate yourself on how you've lived your life and made full use of the cards you have dealt. And I gave myself 8 on 10 there. But that's the way to think about life, right? Right. Like, मुझे ये circumstances मिले. And everybody's circumstances are different. Right. And context is also very different. Correct. If a billionaire becomes a millionaire, for them it's terrible. But if a guy who earns $100,000 a year suddenly earns 1 million, for him it's great. Yeah. But जो बंदा अभी साल का 100 million बना रहा था, उसको अगर 10 million भी बना तो he's like, boss, 10 million is not enough for me, right? So it's all about circumstances, and then from there how you grow your circumstances. And so I think everybody should be judged not on absolute, but on this. Got it. Okay. Coming back to अपना D2C space. अभी what do you think, अगर हम policy की बात कर रहे हैं इंडिया में, जो existing policies है, क्या आप उससे खुश हो? अगर नहीं तो अगर if you were to make and add a few more policies to develop and growth of the entire ecosystem, आप कौन सी चीज़ ऐड करते हैं? Yeah, I think that India is largely democratic. India free market है, India competitive market है. The fact that in India Flipkart fought Amazon shows कि India truly free market है, right? China में ऐसा नहीं हुआ. China में global players were not allowed to come and play the same battle and the same fight, and that's why in India Starbucks is fighting Blue Tokai and Third Wave Coffee, and that's the beauty of the Indian market. हाँ, e-commerce को बढ़ाने में I think we need some further support in terms of reach. India Post अभी काम कर रहा है to reach the most remote pin code. Some of that ज़रूरत होगा, but I think policy-wise government has done enough to at least promote it, to make it easier. Payment infrastructure is crucial. जब मैं काम कर रहा था तो 95% of orders were COD. अभी कोई ब्रांड में हम सुनते हैं कि actually only 30% of orders are COD. And number is more like 60% COD now. It is a massive step in the last 5 years, right? So policies are moving the right direction अभी, and obviously Jio has come and data is cheap and सबके हाथ में smartphone है and smartphone data cost कम होता जा रहा है. तो I think there's lots happening for e-commerce to grow, and it's a perfect storm. From here, where we go is actually not dependent on government and policy, dependent on operators and businesses. हम कैसे leverage करें हमारे circumstances, जो cards हमें हमारे हाथ में है, to make it even bigger. That's what we need to think about. Okay. I think you created a video on Adivasi hair oil, isn't it? So part of policy can be कि ये जो brands हैं, ये जो products आते हैं without having Ayush license or any kind of other license, they should not be there. Illegal तो है भाई. अभी illegally बिक रहा है तो फिर government watchdog can come and stop it. But अभी आप देखो Amazon पे कितने listings हैं. उसमें 1-2% listings तो illegal होंगे. But अभी
10 लाख लिस्टिंग में दे कीप रिमूविंग, बट यू विल स्टिल फाइंड समवन हु इज ट्राइंग टू चीट द सिस्टम. तो एक तो है कि हाँ, जो स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स है, जो इलीगल प्रोडक्ट्स है, जो नॉन लाइसेंस प्रोडक्ट्स है, जो स्कैम वाले प्रोडक्ट्स है, वो गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए. बट एज कस्टमर्स हमें भी कुछ करना चाहिए. हमें रिपोर्ट करना चाहिए प्रोडक्ट्स को, हमें खरीदना नहीं चाहिए, हमें इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए हमारे नेटवर्क्स में. तो इट्स ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट बाय दीज प्रोडक्ट्स, नॉट फ्यूल दीज क्लेम्स. बिकॉज देश बहुत बड़ा है, चीटर तो बहुत लोग रहेंगे. अभी 1.4 बिलियन लोग में अगर 1 मिलियन भी चीटर है तो 1 मिलियन तो बहुत लोग है ना. 10 लाख लोग तो बहुत है ना. पॉपुलेशन इतना ज्यादा, पॉपुलेशन इतना है. तो इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल एंड मेंटेन 100% एफिकेसी ऑफ कंट्रोल. ओके, अनदर क्वेश्चन दैट इज कि आज भी इंडिया से बहुत सारे लोग चाइना से सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स और इधर बेचते हैं. हालांकि गवर्नमेंट धीरे धीरे बैन कर रहा है, कुछ भी चीज़ें कर रहा है, बट चलो वो एक एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वी लुक एज एन इंस्पिरेशन एज वेल सर्टेन टाइम्स कि चाइना स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को लेके काफ़ी बहुत बड़ा है और इंडिया में बहुत ग्रोथ की जा सकती है. इस टॉपिक पे बहुत बार बात की जाती है, राइट? आई एम श्योर इन योर सर्कल ये तो और ज़्यादा होता होगा. डू यू थिंक वी हैव दैट एबिलिटी इन इंडिया to even become 10% or 20% of where China is today? देखो, पहले तो हमें रियलिटी एक्सेप्ट करना होगा. हाँ जी. आई एम वेरी पेट्रियोटिक एंड आई कीप सेइंग चाइना से प्रोडक्ट्स मत लेना, इंडिया से लेना, इंडिया से लेना. बट मैं अभी इन्वेस्ट करता हूँ D2C ब्रांड में. कोई सर्टेन कैटेगरीज है जहाँ इंडिया में बनता ही नहीं है प्रोडक्ट्स एट दैट लेवल, राइट? सो इफ यू लुक एट सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इफ यू लुक एट शूज, इफ यू लुक एट हैंडबैग्स टू अ सर्टेन लेवल, if you look at mobile phones, now we are trying with producing the iPhone in India. But ऐसे categories है home में, home decor, home improvement, home organization, luggage. Lot of these categories still there is some amount of advancement in China जो हमारे पास नहीं है. I heard a very interesting thing. Indians को अगर चाइना जाना है बिजनेस वीजा पे तो उनको वीजा मिल जाता है, 1 हफ्ता लग जाता है, मिल जाता है. अभी चाइनीज कैन नॉट कम टू इंडिया, ऑलमोस्ट नॉट अलाउड टू कम टू इंडिया. बट लॉट्स ऑफ इंडियन ब्रांड्स एंड लॉट्स ऑफ इंडियन बिजनेस डिपेंड ऑन चाइना सप्लाई चेन. तो यस, 10 साल, 20 साल, 30 साल में वी शुड रिड्यूस दिस डिपेंडेंसी फॉर आवर कंट्री एंड वी शुड ट्राई टू रेप्लिकेट व्हाट दे हैव इन मैन्युफैक्चरिंग प्राउस. बट रियलिटी पे एक्सेप्ट करना होगा कि वी आर नॉट देयर येट और हमें वहां पहुंचने में टाइम, एफर्ट, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट लगने वाला है. बेसिकली China is producing world-class, world-beating products. India is producing good products. हमें and कोई categories में हम great products, excellent products, world-class products बना रहे हैं. But in a lot of categories we're still producing good products. And so for an Indian customer, sometimes a made in China product in that category may be better quality. But I will say कि last 5-7 साल में I've seen a big improvement. A lot of made in India products are becoming world-beating, world-class. And there are certain industries where we are already doing world-class work, right? Like textiles and garments and all of those things. तो आगे तो बढ़ेंगे, पर जब तक बढ़ेंगे तब तक एक्सेप्ट करना होगा कि वहाँ से कुछ माल लेना होगा. So it will take time. I think so. A lot of time. Manufacturing is not solved overnight. Okay. What kind of problems manufacturers come to you with? Manufacturing में capital is required, right? Because बड़े factories है, उसमें बड़े machines है, बहुत लोग रहते हैं, तो upfront cost of manufacturing is very high. And so that capital requirement cannot be circumvented as such. Okay. Also एक और चीज़ है ना मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया में एक्चुअली लोग ठीक प्रोडक्ट्स बनाते हैं. आयुर्वेदा में आप देखो, आई थिंक 8,000 लाइसेंस आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स है. बट आई कैन टेल यू देयर आर लेस देन 50 ब्रांड्स डूइंग मोर देन 200 crores, 250 crores इन रेवेन्यू. So true. तो प्रोडक्ट्स तो सब बना लेते हैं, और फिर ब्रांड बनाने में, बेचने में, स्केल बनाने में वो टफ है. एंड दैट्स व्हाट मैन्युफैक्चरर्स आर स्ट्रगलिंग विद टुडे. अच्छा, आपने तो आयुर्वेदिक ब्रांड बनाया और उसको एग्जिट भी लिया है, सक्सेसफुल बनाया पहले. व्हाट डू यू थिंक व्हाट वर्क्स द मोस्ट फॉर एन आयुर्वेदिक ब्रांड और अ मैन्युफैक्चरर और समवन इन D2C? व्हाट आर दे मिसिंग आउट इवन टुडे? यार आई वुड से अभी तो इंडिया में बहुत मीटू प्रोडक्ट्स आ गए हैं. बहुत से मीटू प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कॉपी कैट प्रोडक्ट्स. We did well in doctors because हम truly unique, genuine research products बेचते थे. Correct. It's harder to sell unique products. Harder, tougher. Yeah. But why real value बनेगा आपके? If you're selling something unique,
That's when you'll make the real money. Okay. And then the distribution and everything else comes. Got it. Okay, last question. Because your wife is your business partner and has been there in highly involved in part of your business, right? So I want you to share relationship advice for Gen Z entrepreneurs, very precise. If you get into a working relationship with your partner, you have to be sure the relationship is extremely serious. क्या है कि अभी I think if it's a relationship that you're dating, etc., all of that, or you're figuring out still, getting work involved gets extremely complicated. Extremely complicated. Just imagine, अगर मैं मेरे wife के at that time she was my fiance. Okay. अगर मैं मेरे fiance के साथ काम करता था, she became the CEO of the company, co-founder of the company, and 6 months later we decided to split up. What do you do then? सही बात. How do you manage equity? How do you manage team? How do you manage responsibility? It's a mess, right? So Yeah. only if you're sure, bring your partner in. And if it's a fling or one of those relationships, then be really careful involving the person in work. Agar chala and you are a partnership and you bring a partnership together and it works, it's fantastic. It's the most value you can ever create, because agar aap life mein bhi partners ho, so the amount of effort you will put into the business together, 1 plus 1 is equal to 4 and not 2. But if things go wrong, 1 minus 1 is not 0, it's minus 1000. For sure. The amount of problems you can create. So be very careful if you're bringing someone close to you, friend, brother, sister, father, cousin, into the business, jahan personal relationship hai. Because if it goes south, a lot more can go south other than business. Agreed. Okay, last question. See, the fact that now with access of internet, social media, and when you are a personal brand, so let's say you're an entrepreneur doing your own business and taking out a little bit of your time to create content and doing social media and personal branding, what do you think is the opportunity out there, and how it has been for you so far? You've been in the personal branding space for the last 1.5 years, right? Yeah, I think जो भी आप business में हो, B2B, B2C, investing, running a brand, etc., all of that, अभी ना knowledge is democratic, access is democratic, network is democratic, reach is democratic. अगर आपको मेरे साथ बात करना था, you could just drop me a DM on Instagram or LinkedIn and you'll be able to reach me. Right. Maybe not in the first message, but maybe in the second message, you'll be able to reach me, right? Yeah. And so, जो हमारा digital दुनिया है, उसमें a part of your identity will be your social presence. Some people may choose not to have it, and that's totally okay. But for the people who choose to have it, it can be very powerful. I've met some of the most important people in my work life through LinkedIn. DMs on LinkedIn. I've made some very close friends. I've hired people in my company. Now, when I am starting a company today, I'm running a company. For me to do employer branding is so easy because now I have a social presence, distribution. People know who I am. They relate to me. Correct. If you're a brand owner today, customers are not just buying your product. They're buying your vision. They're buying your mission. They're buying why you're talking about what you're doing. They're buying your purpose. So distribution creates authenticity in the mind of the customer, whether B2B or B2C. And I heard a very interesting thing recently. I heard that even for loans, 2% of the underwriting criterion is now becoming social media and footprint. Because that's where you can figure out what the influence of the person is, what the reach of the person is, etc., all of that. So it's becoming not just part of fun, it's becoming a part of your digital footprint and your identity now. And by the way, in the generation of my dad, it was not so much. But in today's generation, the biggest CEOs, the biggest sports people, the biggest achievers in our country, all have social presence. For sure. All right. Anything at the end of the podcast you want to share to all of us who have been watching us so far? Superb. Really enjoyed the conversation. बहुत से podcast किए हैं जहाँ लोगों ने cookie cutter questions पूछे हैं. आपने research किया है. You spent time to come up with the questions. So thank you so much. And guys, please hope you enjoyed the conversation and follow Ayush's page.